Good morning and welcome to the series of medical legal tips for the doctors. My dear friends, today's topic is based on the question which has been asked by one of our general practitioner. So what is the question? Sir, I am a general practitioner, and so is it necessary to take the consent in general practice? And if yes, in which circumstances and how to take it? That means how to take the consent in general practice. So my dear friends, whenever any patient comes to you for the examination, so he takes the case paper, or he sits in a queue, or enters in your cabin, or lies down on the examination table. So all these actions or indicates that patient is ready to be examined by you. So by his or her action or by virtue of the gesture, here the patient gives the consent. That means action or the gesture of the patient indicates that or implies that he is ready to be examined by you. This is called as implied consent, because here by the action or by the virtue of gesture it implies that patient is ready to be examined. जब पेशेंट आपके पास आता है और लाइन में बैठता है या आपके केबिन में एंट्री करता है या आपके एग्जामिनेशन पे टेबल पे सो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे एग्जामिनेशन करवाने के लिए तैयार है. So this is implied consent and this is sufficient in general practice for the examination of the patient, and no further express consent is necessary. But remember that such type of implied consent is valid only for the examination of the patient and not for the purpose of any procedure to be done by the on the patient. तो ये जो कंसेंट रहता है, जो यहाँ पे पेशेंट कोई आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं देता है या फिर ओरली नहीं बोलता है कि आई एम रेडी टू बी एग्जामाइन, बट बाय उसके एक्शन से ये इंडिकेट करता है कि यस आई एम रेडी टू बी एग्जामाइन, और तो इसको इम्प्लाइड कंसेंट बोलते हैं. और जनरल प्रैक्टिस में ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज दिस इज वैलिड और वो सफिशिएंट भी है. यहाँ पे कोई आपको रिटर्न फॉर्म में या पेशेंट से ऐसे ओरली बोल के लेना जरूरी नहीं है कि आई एम रेडी टू बी एग्जामाइन. बट वेन एवर यू वॉन्ट टू डू एनी प्रोसीजर एक्सप्रेस कंसेंट इज नेसेसरी. एक्सप्रेस कंसेंट में यानी क्या होता है? व्हाट इज द एक्सप्रेस कंसेंट? एक्सप्रेस कंसेंट मीन्स आइदर इट इज इन द रिटर्न फॉर्म, मतलब हम जो रिटर्न में लेते हैं जहाँ पे कंसेंट फॉर्म पे हम पेशेंट का साइन वगैरह लेते हैं, या फिर इट इज गिवन ओरली, मतलब पेशेंट राइटिंग में नहीं देता है, रिटर्न नहीं देता है, लेकिन ओरली बोल देता है कि यस आई एम रेडी टू बी एग्जामाइन. लेकिन यहाँ पे और एक सवाल आता है कि जो पेशेंट अगर ओरली देते हैं तो आगे चल के अगर इन केस ऑफ एनी एलिगेशन अगेंस्ट यू, आप कैसे प्रूव करोगे कि यहाँ पेशेंट ने ओरल कंसेंट दिया था, इसलिए इट इज बेटर टू टेक द रिटर्न कंसेंट. सो व्हेनेवर यू वांट टू डू एनी प्रोसीजर लाइक which are most commonly done in general practice like suturing or catheterization or any other minor procedure which we are generally doing in general practice, written consent is preferred, or you have to take the express consent, preferably written consent. But only for the examination it is not necessary. Implied consent is sufficient. Now the question is, so whenever you are taking the written consent of the patient, आप जब written consent लेते हो, कब लेना है आपको written consent? When you want to do any procedure, then only. So जब आप written consent लेते हो तो always remember that you have to take the consent of the patient himself or herself and not of the relative of the patient. बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आता है, उसको इंजरी हुई रहती है और पेशेंट का कंसेंट नहीं लेते, उसके साथ में जो कोई आया रहता है उसका कंसेंट लेते हैं. सो फॉर कन्वीनियंस पर्पज ये आप सब करते हो, लेकिन बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट लीगली वैलिड. You have to always take the consent of the patient himself or herself. Then only it is legally valid, because it is only the patient who can decide what is to be done and what should not be done with his or her body. So always remember this, and you can take the consent of the relative only when the patient is unconscious or of unsound mind, or the patient is minor, that is below 18 years of age. So now the question is that कभी कभी जनरल प्रैक्टिस में ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है, यू हैव टू फेस द सिचुएशन वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेक द रिटर्न कंसेंट. यू आर अलोन इन ओपीडी पेशेंट, और देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ द पेशेंट, मेंटेलिटी ऑफ द पेशेंट टू गिव समथिंग इन रिटर्न, और पेशेंट फील समथिंग ऑड. आप पेशेंट को कुछ तो अजीब लगता है, या वहाँ के लोकल
एरिया में आपके ओपीडी है वहाँ पे, यार एक तो इसको इतना इंजरी हुआ और कुछ हमसे लिखवा के ले रहा है, क्या कर रहे हैं हमसे, करवा रहा है हमसे। तो ऐसे सिचुएशन में, या इफ द पेशेंट इज नॉट ready, possible to take the consent by for any reason, so ऐसा नहीं है कि आपको कंसेंट नहीं लेना है, रिटर्न कंसेंट, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल, so always try and do one thing: prepare the case paper of the patient and mention one line that this procedure was done by the oral consent of the patient. अभी आप बोल रहे थे, अभी तो आप बोल रहे थे कि रिटर्न कंसेंट लेना है, अभी तो बोल रहे हैं ओरल कंसेंट। तो रिटर्न कंसेंट whenever possible always take it, you have to take it, but by because of some reason, if it is not possible, then only you have to do this. You have to prepare the case paper of the patient and write on that this procedure was done by the oral consent of the patient. So this one line, though it may not save you 100%, but it may protect you to the great extent, and always preserve this case paper. So it will be helpful if there are any allegations, unfortunately, against you regarding the procedure which you have performed on that patient. So always remember, implied for the examination purpose only. In case of general practice, no written or oral consent is required. It is given by the by virtue of action of the patient, that is called the implied consent. So, and whenever you have to do any procedure, always take the express consent, preferably in the written form. And when it is not possible due to under certain circumstances to take the written consent, at least prepare the case paper and mention the one line that this was done by the oral consent of the patient. Okay, I think this is the sufficient answer. If any question regarding this or any query regarding this, you may WhatsApp on the number 72190318822. I am repeating the same: 72190318822. Give your suggestions, which are most welcome, and thank you for watching this video. Thank you.